ये कहानी जो मेरे करीबन 10-11 साल पहले जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी पेरेंटल एलियनेशन को समझने की, वहां की तब की कहानी है करीब। जी। तो बच्ची जो है, यूजुअली जो बच्ची है वो बहुत खुश होना चाहिए था कि वो सब एनिमल्स के लिए, लेकिन जैसे ही फादर उसके अंदर जू के अंदर एंटर करते हैं, बच्ची के चेहरे पे ऐसा दुख, आई मीन हम्म। देयर वाज फियर ऑन हर फेस। द फादर वाज ऑब्वियसली वेरी सरप्राइज्ड। सो ही आस्क्ड द चाइल्ड कि बेटा क्या हुआ? द चाइल्ड सेड, पापा, मम्मी और नानी ने मुझे कहा था कि आप मुझे जंगल ले जाके टाइगर्स को खिला देंगे। फॉर अ चाइल्ड, दैट zoo was exactly like a jungle, and राइट। she was so scared कि आज उसको लगा कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मेरे फादर मेरे को मारने के लिए, टाइगर को खिलाने के लिए लेके आए। जी। This, in a nutshell, basically describes what parental alienation is. Dr. Kapur is a medical doctor and management graduate from Indian School of Business, Hyderabad. He founded Bamboo Tree Children's Foundation, which conducts research and leads advocacy on children's rights. They are currently focused on raising awareness on children of separated parents. His NGO has created a YouTube platform, Bamboo Tree Children's Foundation, where he invites child psychologists and legal luminaries from across the world to discuss policies, strategies, and tools that truly further the welfare of our children. He is a member of Global Parental Alienation Study Group and has published multiple articles and research papers on parental alienation. He has conducted several workshops for family court judges, along with state judicial academies across the country to create awareness about topics like parental alienation and shared parenting. He has also conducted a pan India survey on family courts in India, which we'll discuss more in today's podcast. Dr. Kapoor, welcome to the show. Hello and welcome back to Hara Nahi, a podcast dedicated to raising awareness on parental alienation. इस पॉडकास्ट पर हम ऐसे अतिथियों से बातें करते हैं जो पेरेंटल एलियनेशन के बारे में समझते हैं, जानकार हैं और उनकी कहानियां सुनते हैं जो अभी इस दौर से गुजर रहे हैं. Today we have with us Dr. Rakesh Kapur. Dr. Kapur, welcome to the show. Thank you so much, Pallavi. It's such a pleasure coming to your show. But I must really, really appreciate the amazing work that you and Haranahi is doing in raising awareness about this very unrecognized form of child abuse. Thank you, Dr. Kapoor. So, Dr. Kapoor, let's start with the first question, which is you've founded Bamboo Tree Children's Foundation. Tell us a little bit more about why you founded this organization and the work that you're doing there. Sure. Pallavi, I was doing, like I mentioned, I was doing a lot of work with a lot of organizations in the mental health space. Ji. And I saw this one couple of incidents which actually really that kind of pinched me, and I said that this is a huge gap which we need to fulfill. I'm personally extremely fond of children. All I wanted to do in my life was to become a pediatrician, but that's another story. Yeah. But having said that, the issue that I saw was that, urban India today, especially urban India today, is going through a serious social revolution. And that revolution is about parental separation or divorce. Ji. दुनिया भर के अंदर ये पिछले 40-50 सालों से चल रहा है, ठीक है। इंडिया अभी उस कतार में पहुंचा है, लेकिन जी. वी आर सो अनप्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड स्पेसिफिकली हमको ये नहीं समझ आता है कि व्हाट इज द रियल इम्पैक्ट ऑफ दिस, because the real victims, I hate the word victims, but I try to understand from the fact that the real people who get impacted the most are the children, a child of a separated parent. So now what we saw was कि India is not even collecting data about कि divorce rates India में हैं कितने. Ji. अगर आप इस वक्त गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स पे जाओ तो वो कहते हैं कि 2% है. And we all understand, we've done surveys in schools all over. The actual rate, all India is about 16%, but in urban metros like Delhi, Bombay, Bangalore, Calcutta, जी. it's approximately 30%. यानी कि हर 3 में से एक बच्चा is जी. growing up
in a separated household in this. और राइट। अगर हमने फिर दुनिया भर का रिसर्च देखा कि व्हाट इज इट, कि क्या डाइवोर्स बच्चों के लिए खराब है, so we found कि no, divorce as such, if the parents cooperate, is not bad, but then they suffer from two major issues. One is the parental alienation, which we are talking about, which our survey showed is there in almost about 50 to 60% of these cases. So that means what we found was करीबन 1,32,000 बच्चे, 1,32,000 children जी। get added to this pool every year in India. Kariban 1.5 million बच्चे are already growing up in this kind of an environment. And we said कि कोई इस चीज पे काम नहीं कर रहा है. जी। To put it in perspective, 1,32,000 अगर मैं कहूँ, there are no more than 12,000 child trafficking cases in India today. But उसके ऊपर फोकस कितना है, रिसर्च कितना है? There is approximately 30,000 rape cases which are filed in India every year, right? How much amount of focus? There are 30,000 murders happening in India. But 1.5 लाख बच्चों का बच्चे हर साल, हर और साल। इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है. So that is when we decided to formulate, because see, divorce is irreversible. The increase in divorce rates is irreversible. At the end of the day, we don't want to get into the causes किस लिए है, but that is something which we really want to talk about. And the second issue which we found was, ये हम सब बोलते रहते हैं, ये best interests and welfare of the child is paramount. इसका मतलब क्या है? What does best interest mean to you can be very different from what best interest means to me, right? So we tried getting in scientific thinking and research into ki finally what should be the policy for best interests and welfare of the child. So all those, and then finding some wonderful people to work along with, made me formulate this or set up this NGO, which we called Bamboo Tree Children's Foundation. And just to give you the reason why we chose the word bamboo tree, आई वाज गोइंग टू आस्क यू दैट। right? यस। So, bamboo tree is the only tree in the world, okay? उसको आप 5 साल तक पानी देते रहोगे, वो शायद 2 इंच बढ़ेगा, और सडनली सिक्स्थ ईयर के अंदर इट विल ग्रो अप टू अप्रोक्सीमेटली 2 feet or राइट। 25 feet, right? The राइट। same is with children. 5 साल तक आप उनको प्यार दोगे, कुछ नहीं पता चलेगा. 5 साल तक अब्यूज करोगे, तब भी पता नहीं चलेगा. बट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, सडनली दैट इम्पैक्ट हैपेंस. दैट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन चिल्ड्रन एंड बैम्बू ट्रीज. फैंटास्टिक। सो डॉक्टर कपूर, हमने ऑलरेडी थोड़ा-सा स्किम किया, बट मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा डिटेल में हमें बताएँ कि पेरेंटल एलियनेशन का मतलब क्या होता है? गुड. तो पेरेंटल एलियनेशन की डेफिनेशन और इसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूँ, राइट? जी, बिल्कुल। ये कहानी जो मेरे करीबन 10-11 साल पहले, जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी पेरेंटल एलियनेशन को समझने की, वहां की तब की कहानी है करीबन. तो एक 4 साल की बच्ची को मैंने देखा जू के अंदर, ठीक है. कहानी ऐसी थी कि एक फादर जो हैं, जो सेपरेट हुए हुए थे अपने बच्चे वाइफ के साथ पिछले करीबन 2-2.5 साल से. हुँ। तो उनको 2-2.5 साल के बाद पहली बारी बच्ची से मिलने का मौका मिला, तो उन्होंने सोचा कि हाँ, मेरी बच्ची जो है वैसे एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है, क्योंकि जो उनकी याद थी कि जब वो 1.5 साल की थी, उनके डॉग्स के साथ बहुत खेलती थी, एलिफेंट से बहुत प्यार करती थी. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको मैं सबसे पहले दिन जू लेके जाता हूँ. जी। तो बच्ची जो है, यूजुअली जो बच्ची है वो बहुत खुश होना चाहिए था कि वो सब एनिमल्स के लिए, लेकिन जैसे ही फादर उसके अंदर, जू के अंदर एंटर करते हैं, बच्ची के चेहरे पे ऐसा दुख. शी वॉज एब्सोल्युटली अगास्ट. आई हुँ, मीन, हुँ। देयर वाज फियर ऑन हर फेस. द फादर वाज ऑब्वियसली वेरी सरप्राइज्ड, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं. एंड एज आई ऑलवेज से कि फादर्स यूजुअली प्ले द रोल ऑफ अ जोकर इन अ राइट। चाइल्ड्स लाइफ. एटलीस्ट यू ऑल ऑफ अस हैव सीन दैट, राइट? तो उन्होंने बहुत कोशिश की एंटरटेन करने के लिए, नई कहानियां सुनाने के लिए एनिमल्स के बारे में, लेकिन बच्ची दस से मस नहीं हुई. सो देन द फादर सेड, हो सकता है कि आज किसी और प्रॉब्लम में हो, कुछ एंजाइटी में हो. तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आज वापस ले जाता हूं इसको, किसी और दिन फिर से जू लेके आऊं.
लेकिन जैसे ही वो बाहर आई बेटी, the child was back to being her happy self. She was like, again, giggling away to glory, wanted gifts. एक वहां पे टेडी बियर की शॉप है, मेरे को टेडी बियर्स खरीद के दो एंड ऑल ऑफ दैट. सो द फादर, लाइक ऑल ऑफ अस, वर वेरी सरप्राइज्ड कि ये ऐसा कैसे हुआ, राइट? जी। सो he asked the child कि बेटा क्या हुआ. The child said, पापा, मम्मी और नानी ने मुझे कहा था कि आप मुझे जंगल ले जाके टाइगर्स को खिला देंगे. For a child, that zoo was exactly like a jungle. And राइट। she was so scared कि आज उसको लगा कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मेरे फादर मेरे को मारने के लिए, टाइगर को खिलाने के लिए लेके आए. जी। This, in a nutshell, basically describes what parental alienation is. लेकिन to go further, the scientific explanation of this is these are tools and strategies or alienating behaviors used by, so there is one who is known as an alienating parent. ये typically एक divorce situation में होता है, लेकिन हमारे घरों में भी होता रहता है. जैसे आप कभी अपने नॉर्मल घर पे भी देखते हैं ना, अगर किसी आपको देखे, आपको कहते हैं कि यार जो भी आप दोनों को, मियाँ बीवी को लड़ाई करनी है, बच्चे के सामने मत करिए. जी। Do not put the hate in that. But in divorce cases, because of a feeling of anger against each other, one parent tends to use a lot of tools, alienates, brainwashes, poisons the mind of the child, feeds a lot of stories and lies, like which I spoke about, right? In order to compel the child to reject the other parent. So the parent who is teaching all of these lies is known as the alienating parent, and the parent against whom the hate is coming is known as the rejected parent or the targeted parent, typically. ओके। तो इसमें आपने कहा कि 2 पार्टीज़ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हैं। माता और पिता में से जो भी वो पेरेंट हैं जो दूसरे पेरेंट के प्रति बच्चे के मन में नेगेटिव इमोशंस या ऐसी भावनाएँ पैदा कर रहे हैं, जैसे आपको उनसे डरना है या आप वो हमारे साथ अच्छा नहीं करते या दुःख की या गुस्से की भावना बच्चे के अंदर पैदा करते हैं, वो एलियनेटिंग पेरेंट कहलाएँगे। और जिनके खिलाफ ये चीज़ हो रही है वो टारगेटेड पेरेंट कहलाएँगे। Correct. तो ये टर्मिनोलॉजीज़ हम इस पॉडकास्ट में बार-बार यूज़ करेंगे। जी। सो ये हम जो फर्स्ट थॉट जो आता है कि अच्छा यार ये मियाँ बीवी का झगड़ा है, हस्बैंड एंड वाइफ आर फाइटिंग, ठीक है, को चाइल्ड हैज बिकम कोलैटरल डैमेज, एज दिस से, हुँ। राइट? राइट। But unfortunately, that is not the truth. As we go along the podcast today, we will understand that this is a very severe form of child abuse, which leads to outcomes in these children worse than even sexual abuse of children. तो रिसर्च पूरी दुनिया के अंदर की हुई गई है कि हम इसको ना इग्नोर कर देते हैं कि भाई मियाँ बीवी को पहले किसी तरह ठीक कर दें, जी। ठीक है ना, एंड दैट इज हाउ. बट द फर्स्ट थिंग इज बिकॉज इवन सेक्सुअल अब्यूज से भी ज्यादा बुरे आउटकम्स होते हैं इन बच्चों के अंदर. Therefore, the first thing in this is we must protect the child first. जी। Because the adults, that is the husband and wife, can be protected later, but the first thing that we need to do is protect the child, right? So, जी। which we will obviously discuss in greater detail how to do it and how to go about Sure. it. In fact, Dr. Kapoor, while we're speaking of it, I would love to dive a little bit deeper into this. When you say that इसके repercussions इतने strong होते हैं, it's worse than sexual abuse. Could you highlight a little bit more, maybe through a story or a little bit more about short term में और long term में बच्चों पर इसके क्या impact दिखाई देते हैं? या फिर हम as members of the society हम किसी बच्चे को देख करके क्या ये पहचान सकते हैं कि ये बच्चा parental alienation का शिकार हो रहा है? Right. तो ये इसको मैं दो सवालों में डिवाइड कर देता हूं कि बच्चा पेरेंटल एलियनेशन का कैसे वो हो रहा है. सो ओके, बिफोर आई इवन गेट इनटू दैट, तो किसी भी बच्चे को अगर आपको एलियनेट करना है फॉर द एलियनेटिंग पेरेंट,
तो उनको तीन चीजें करनी बहुत जरूरी है। जी। सबसे पहले कि उस बच्चे को टारगेटेड पेरेंट से आइसोलेट किया जाए। हम्म। यू नो, इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद भी बच्चे को मिलने नहीं देते हैं जी। दूसरे पेरेंट्स से, राइट। आइसोलेशन, और आइसोलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आज की दुनिया में जब हम फेक न्यूज इतनी देखते हैं, फेक न्यूज को अगर हमें काउंटर करना है तो क्या तरीका है? ट्रूथ, राइट। इंफॉर्मेशन, पर राइट। अगर मिस इन्फॉर्मेशन से, अगर हम ट्रुथ को लेके, अगर ट्रुथ से बचाना चाहते हैं बच्चे को, उसको सिर्फ लाइक्स की दुनिया में रखना चाहते हैं, बिकॉज द मोमेंट ही सीज the targeted parent being exactly the opposite of what the alienating parent is saying, तो यस। वो सारा खत्म। तो फर्स्ट इज आइसोलेशन। जी। दूसरी चीज जो उनको करनी है, व्हाट वी स्पोक अबाउट, आपको वो जो जू का स्टोरी बताया, दैट फियर और हेट्रेड टुवर्ड्स द टारगेटेड फियर, फियर और हेट्रेड ऑफ द टारगेटेड पेरेंट। यानी राइट। कि वो टारगेटेड पेरेंट से या तो उसको डर लगना चाहिए या उससे कोई घृणा होनी चाहिए उसको। इट्स जी। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जी। जो जू की स्टोरी से आपको परफेक्ट। तीसरा है, सो दैट्स अनदर स्टोरी विच आई मस्ट टेल यू। तो एक और सिमिलर वो था कि एक बच्ची थी, वो आई वॉज इंटरव्यूइंग हर फॉर वन ऑफ द सेशंस दैट आई वॉज होल्डिंग। तो वो मुझे कहती थी कि मैं जब भी पापा से मिलने जाती हूँ, तो उसने मुझे दो चीजें बताई जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगी। एंड चिल्ड्रन हैव अ वे ऑफ सेइंग इट सो ब्यूटिफुली एट टाइम्स, राइट। सो द या। चाइल्ड सेड, फॉर एवरी वन डे दैट आई स्पेंड विद माई फादर as a part of visitation or parenting time, I go through 4 days of torture. 2 days prior of my mother telling me exactly कैसे करना है, क्या झूठ बोलना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं। और 2 दिन उसके बाद, क्योंकि मुझसे वो एक एक चीज पूछती थी कि भैया क्या किया आपने, अगर 2 घंटे भी स्पेंड किए, मुझे एक एक मिनट का बताओ, राइट। जी। सो इट वॉज 4 days of torture for the child, यस। which was happening, right? दूसरा, अगर एक भी फोटो उसको कभी, सो दैट चाइल्ड एक्चुअली टोल्ड दिस फादर कि पापा मेरी जो फोटोज है ना, जैसे वो सोशल मीडिया पे अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इन जगहों पे हम्म। पोस्ट करते थे, ठीक है, अपनी हम्म। बेटी के साथ, राइट। जी। तो उनसे पूछा गया, तो उसने कहा कि पापा प्लीज मेरी ना वो फोटोज मत कहीं पे भी मम्मी तक मत पहुंचने देना। हम्म। ऐसा क्यों? उसने कहा पापा क्योंकि अगर एक भी फोटो आपकी मेरे को दिखती है ना, और मेरी मम्मी को दिखती है जिसके अंदर मैं हंस रही हूं या आपके साथ खुश हूं, ठीक है, हम्म। सो मम्मी क्या करती है, एक हफ्ते के लिए पूरे घर में ना नाना नानी कोई भी मुझसे बात नहीं करता है। हम्म। आधे आधे दिन, एक एक दिन के लिए मेरे को बाथरूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। हम्म। So that is the third important thing that the alienating parent must do, हम्म। which is creating fear of consequences for loving the targeted parent. कि हम्म। अगर उसने टारगेटेड पेरेंट की तरफ कुछ भी लगाव या झुकाव दिखाया, तो जी। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। एंड सी, हम्म। फ्रॉम साइंस वी अंडरस्टैंड, राइट, दैट वी एज ह्यूमंस आर अ फंक्शन ऑफ आउटकम्स। जी। आपने कोई अच्छा काम किया, उसका प्राइज मिलता है तो प्रोत्साहन मिलता है, अगर डांट पड़ती है तो वो आप नहीं करते। नहीं जी। करते, राइट। जी। सो तो आपने ये कहा कि एलिनेटिंग पेरेंट तीन चीज़ें करना उनके लिए ज़रूरी है ताकि वो अपने मकसद में सक्सेसफुल हों। पहली चीज़ आपने कहा आइसोलेशन, कि जो करेक्ट, टारगेटेड पेरेंट हैं उनसे बच्चा आइसोलेट हो जाए या अलग हो जाए, करेक्ट, यानी कि मिलने ना दिया जाए, बातें ना कर पाए, किसी भी तरह से कनेक्टेड ना रह पाए। करेक्ट, दूसरी चीज़ आपने कहा कि बच्चे को टारगेटेड पेरेंट से या तो डर लगे, या फिर उस उनके प्रति घृणा हो या गुस्सा आए या उनको ऐसा लगे कि ये इंसान गलत है, तो वो जो एक फीलिंग है कि दिस पेरेंट इज़ रॉन्ग, ये बहुत डीप रूटेड तरीके से उस बच्चे को सिखाई जाती है। और तीसरी चीज़ ये है कि उस बच्चे को
इस चीज़ से डर लगे कि अगर मैं अपने टारगेटेड पेरेंट के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ या टाइम स्पेंड कर रही हूँ एंड आई एम हैविंग अ गुड टाइम, मुझे मज़ा आ रहा है, अगर मैं खुश हूँ, तो उसके लिए उसको एक तरीके से पनिशमेंट दी जाती है। तो उसे उसका कॉन्सिक्वेंस या उसका नतीजे से उसे डर लगता है और बच्चा ऑटोमेटिकली वो बिहेवियर अवॉइड करता है। True, true. राइट। So that bonding and relationship can never happen between this thing, right? So these are the three main things. But so there is a wonderful researcher, a lady called Dr. Amy Baker, जो पिछले करीबन 40 सालों से इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, 35-40 सालों से। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे एलियनेटिंग पेरेंट्स को इंटरव्यू किया जो अब अडल्ट्स बन गए हैं, राइट, हु जी। आर नाउ 30-40 years ओल्ड। तो उनसे उन्होंने पूछा, तो उन्होंने ना 17 ऐसी एलियनेटिंग टूल्स या स्ट्रैटेजीज शी सॉ वाज कॉमन अमंग ऑल ऑफ देम। सारे एलियनेटिंग पेरेंट्स यूज these 17 kind of alienating tools or strategies, right? Not if all parents, alienating parents, use all of them, but depending on situation too. But they were all 17 only. But what was shocking was, what we found was that these 17 strategies आर एग्जैक्टली द सेम, एकदम वैसी ही हैं डिट्टो, जो हम एक्सट्रीमिस्ट्स या कल्ट लीडर्स यूज करते हैं, जैसे कि सुसाइड बॉम्बर्स। बच्चों को आपने देखा है जो सुसाइड बॉम्बर्स बनते हैं, हम्म। जो कल्ट लीडर्स जो हैं, जो बच्चों को या रिलीजियस कल्ट लीडर्स को अपनी एकदम कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, दीज हम्म। आर एग्जैक्टली द सेम strategies which are used. आई एंड सी। द थ्री मेन थिंग्स इज, उसके अंदर भी अगर आप देखें रिलीजियस या कल्ट लीडर्स जो सुसाइड बॉम्बर, सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों को वो अपने माँ बाप से दूर कर देते हैं और अपनी शरण के अंदर, इन देयर ओन गेटो दे कीप हम्म। देम। ठीक है। हम्म। फिर उनको वो फीड करते हैं कि देखो, जैसे ये कितने बुरे लोग हैं, इन्होंने तुम्हारे साथ, तुम्हारे माँ बाप तुम लोगों के साथ कितना बुरा किया है, राइट? और जी। फिर कि अगर आपने उनकी तरफ थोड़ा सा भी झुकाव दिखाया तो वो आपको जी। बहुत पनिश किया जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए जाते हैं। सो जी। that was the shocking part that obviously came about when we हम्म। went through these strategies or tools used by these alienating parents. um दूसरा आपका, in this itself, like, there was a question about ki what are the short terms and Yeah. long term In fact, I'm sorry, Dr. Kapoor. consequences. Yeah. Please. So before we move on to that, since you mentioned this, and I think this is very interesting, आपने कहा कि जो alienating parent है, वो इस तरह की strategies use करते हैं जो cult leaders या extremists use करते हैं। तो थोड़ा सा और क्या आप इस चीज़ पे elaborate कर सकते हैं कि ये किस तरह की strategies होती हैं, और हम जैसे लोग अगर हमारे friend circle में ये चीज़ देखते हैं, तो क्या हम इसे identify कर सकते हैं? Absolutely, absolutely. So, you know, let me answer your second question first, कि हम इसको कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं and we जी। this thing, right? तो पहले I'll just give you the short background because this is a scientific paper, because मैं हमेशा यही करता हूँ कि मैं अपने opinions को थोड़ा कम रखता हूँ, because I think opinions से ज़्यादा it is more important that we teach science. Opinions we all have. As parents also, I may have a different opinion about how to bring up my child. You may have a different opinion how to bring up your child. But what does science say about it? Right? So the word parental alienation जो है वो सबसे पहले, ठीक है ना, 1980 में कॉइन हुआ था। 1980 में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रिचर्ड गार्डनर, वो उन्होंने सबसे पहले शुरू किया। उनको ना एक रिसर्च आइटम मिला कि फॉल्स सेक्सुअल अब्यूज एलिगेशंस जो होती हैं इन डाइवोर्स केसेस, ठीक है ना, तो वो उसको स्टडी करना उन्होंने शुरू किया। एंड देन ही सॉ हंड्रेड्स ऑफ सच केसेस, और उन्होंने एक एग्जैक्ट पैटर्न देखा, हुँ। राइट? चाहे टर्म जो है, सो वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई एम दिस थिंग, चाहे टर्म फर्स्ट टाइम 1980 में कॉइन हुई है ये, द वर्ड पेरेंटल एलियनेशन बाय डॉक्टर रिचर्ड गार्डनर। लेकिन सबसे पहले अगर आप कोई समझना चाहे पेरेंटल एलियनेशन को, तो एक हिंदी की बहुत ही बेहतरीन मूवी है, वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स गुरुदत्त इज देयर। उन्होंने एक मूवी बनाई थी, कागज के फूल, ब्लैक एंड जी। व्हाइट क्लासिक 1960s में, राइट? That shows parental alienation so beautifully.
सो ब्यूटिफुली इट शोज. सो अगर कोई भी सुन रहे हैं उन मूवी को देखेंगे अगर फिर से, तो यू विल रियलाइज मे बी यू माइट हैव सीन इट बट यू स्टिल कांट connect. But once you see it again, now you'll be able to connect, right? So Dr. Gardner then he saw कि there are 8 behavioral manifestations या symptoms जो एक child में होते हैं, जिससे हम्म, हम recognize कर सकते हैं कि ये actually alienated है, या हो सकता है abused हो, जी right? So जी abused भी हो सकता है child actually, या alienated है, या फिर जैसे हम कहते हैं teenage temper tantrums, हम्म right? Teenagers also sometimes throw those kind of tantrums which are there, right? And they, so that is what we call कि अगर वो reject कर रहा है किसी भी parent को, अपने किसी parent को. So the first thing that he found कि कैसे जब भी आप अगर देखते हैं, there's a statement which I think I must repeat. Hatred is not an emotion that comes naturally to a child. It जी must be taught, हम्म right? As children we are never bought, we are never born with even thinking hatred as a normal emotion. It has to be taught by the society and everything, right? तो जब भी अगर पहला बच्चा आपको आपको कोई बच्चा मिलता है, जैसे लेट्स लुक एट इट कि आप किसी के घर जाते हैं एंड द चाइल्ड सिंपली सेज टू यू, आई हेट माय फादर और आई हेट माय मदर, वट एवर हम्म इट मे बी, हम्म राइट? तो फर्स्ट थॉट हम मेरे में और आप में क्या आता है, जब मेरे फिर फर्स्ट टाइम मैं अगर 10 साल पहले जब मैंने ये सोचना शुरू किया, तो यही आता है कि यार बहुत क्रूर इंसान हुआ होगा इसके फादर या मदर, जिसका ये बच्चा इतना क्यों हेट्रेट कर रहा होगा, राइट? बट द सिंपल आंसर टू दिस इज इवन चिल्ड्रन हु आर अब्यूज्ड हम्म never express such strong hatred and rejection. ये ना वर्ल्ड वाइड स्टडी हुई हुई है ऑफ ऑर्फनेजेस, ऑफ जेल्स, ऑफ चाइल्ड अब्यूज सेंटर्स. इवन अब्यूज्ड चाइल्ड एंड एक्चुअली इवन सेक्सुअली अब्यूज्ड चिल्ड्रन से पूछा गया कि अच्छा आपके साथ ये हुआ है, अब कहाँ जाना चाहते हैं? A number of times they want to go back and stay with the abuser, the हम्म abusive parent. They don't reject, right? क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए. Humans only want, the first and the only thing that they want is self protection, and at हम्म least that parent was giving them roti kapda makan, so they still feel that I want to be there, right? राइट So the first thing is कि whenever any extreme hatred or emotion is expressed, हम्म right, question it. हम्म Extreme hatred in child will never be true. Second, always look for, हमेशा ना कोई भी अगर lay person है, right, who is going, like you are going into a house of your some distant friend or relative, और जब बच्चा ये बोलता है, so दूसरी चीज आप ये जरूर उससे एक दो सवाल जरूर पूछिए. दूसरा सवाल कि अच्छा बेटे क्यों करते हो आप इतना हेट्रेड, क्या हम्म हुआ, ऐसा क्या हुआ, राइट? You will suddenly see two things which are very important. जो, and these are all 8 जो मैंने आपसे कहा symptoms या 8 behavioral manifestations which Dr. Richard Gardner discovered. राइट Dr. Richard Gardner discovered 8 behavioral manifestations or symptoms, right? हम्म दूसरा, so one is जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत extreme hatred, हम्म ठीक है. दूसरा कि आप उससे जब पूछेंगे कि बेटा क्यों, वाई डू यू हेट द फादर, ऐसा क्या हुआ, या मदर कि ऐसा क्या हुआ, लुक फॉर टू थिंग्स. वन इज यूज ऑफ एडल्ट लैंग्वेज, यानी कि हम्म एक बच्चा मेरे को बोलता है कि सर मैं इसीलिए क्योंकि मेरे जो फादर हैं मेरे को ब्रेन वॉश करते हैं. 7 साल के बच्चे के लैंग्वेज में द वर्ड ब्रेन वॉश कहाँ से आया? बिकॉज इट हैज बीन फेड इन, एंड द चाइल्ड लाइक अ पैरट और अ तोता is repeating what has been फेड fed to the child, right? So look for those adult languages. The third is what he said very nicely is weak or frivolous rationalizations. यानी कि जब आप उससे पूछोगे अच्छा बेटा आपको क्यों आपके फादर या मदर अच्छे नहीं लगते हैं, तो एक क्लासिकल इसका एग्जाम्पल है, ये अगेन डॉक्टर रिचर्ड गार्डनर के उधर से ही आया है. जी जैसे कि वो उन्होंने बोला कि एक बच्चे से पूछा गया कि भाई आप क्यों ऐसा हेट करते हो, उसने कहा मेरे जो फादर है ना, मैं जाके वहां पे पढ़ना चाहता हूं और वो मेरे को डिज्नीलैंड या खिलाने ले जाते हैं, वो मेरे को फेल करवाना चाहते हैं.
कैन यू एवर इमेजिन अ चाइल्ड जिसको पढ़ाई डिज्नीलैंड से ज्यादा पसंद होगी, right? जी। So that is why the child is not able to, because the alienating parent can हुँ, teach कि गलत क्या है, पर उसके कारण जब आप पूछोगे ना, वो बच्चा अपने दिमाग से बनाने की कुछ कोशिश करेगा, और वहां पे यू कैन इजिली कैच ऑन राइट, टू सच थिंग्स, राइट। right? हुँ, The हुँ, other very very important thing which he said was spread of animosity. हुँ, यानी कि हुँ, मतलब क्या? चलिए, माना कि आप अगर अपने घर पे, अगर अपनी जिंदगी में कहीं पे जाएं, ठीक है ना, गो बैक एंड लुक इनटू योर लाइफ, हो सकता है कि किसी रिलेटिव या किसी कजन के साथ आपकी ना बनती हो, आपकी थोड़ी बहुत दुश्मनी हो, क्या जी, उसके चक्कर में आप उसके फादर मदर, उसकी पूरी फैमिली को हेट करना शुरू करेंगे? ऑफ बच्चा कोर्स ऐसा नहीं करता है। राइट, बच्चा राइट, ऐसा नहीं करता है। उसके लिए, सो लाइक इन दिस एग्जांपल आल्सो व्हाट यू विल डू इज कि द चाइल्ड कैन से कि ओके, मेरे फादर खराब है, पर दादी से तो मिल लो, हुँ, कजन्स तो हैं, बट राइट, दे विल बी अ स्प्रेड ऑफ एनिमोसिटी, यानी कि फादर की पूरी फैमिली ही खराब निकलेगी, या मदर की, टारगेटेड पेरेंट की जो पूरी फैमिली है, उसकी पूरी फैमिली के बारे में ही दैट चाइल्ड विल स्टार्ट अब्यूजिंग or be राइट, against, right? So हुँ, these are very very important ways for anybody, a lay person. So I will, and again before ending this part, I'll very very humbly request आपके जितने भी listeners हैं, और जी, जब भी आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल मिले, जरूर बच्चे से दो तीन सवाल जरूर पूछिए। जब भी आपको कोई हेट्रेड दिखती है, सबसे पहली चीज पूछिए इससे क्यों, पता करने की कोशिश कीजिए, और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंटली पूछने की कोशिश करिए कि आखिरी बारी बेटे आप कब मिले थे, या बेटी आप कब मिले थे उस टारगेटेड पेरेंट से। क्योंकि जी, जब आप ये चीजें, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज लाइट बल्ब मोमेंट्स। जब कोई एक स्ट्रेंजर आके सवाल पूछता है ना बच्चे से, तो सडनली बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग वापस आ जाती है, एंड दैट स्टार्ट्स द होल हीलिंग प्रोसेस विद इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड। बच्चे को अगर, एज वी विल डिस्कस एट अ लेटर स्टेज, कि व्हाट इज द सोल्यूशन एंड हाउ डू वी हील द चाइल्ड, हाउ डू वी ट्रीट द चाइल्ड, तो द राइट, फर्स्ट थिंग इज वी मस्ट रिकनेक्ट द टारगेटेड पेरेंट विद द चाइल्ड, हुँ, राइट? और हुँ, वो तभी हो सकता है कि बच्चे को इंटरनली हम क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएं, और वो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगी? इन लाइट बल्ब मोमेंट्स से। हुँ। Sure. Dr. Kapoor, this is very powerful, and I think ये बहुत ज़रूरी है. It's so important that I want to re-emphasize it. आपने in a nutshell ये कहा कि अगर कोई बच्चा एक्सट्रीम हेट्रेड दिखाता है, और स्पेशली अगर वो एडल्ट लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, बड़ों की तरह से बात कर रहा है, जो उसकी उम्र के लिए नॉर्मली आप उसके उम्र के बच्चों को उस तरह से बात करते हुए नहीं सुनेंगे, जैसे कि मेरी मम्मी मेरे पापा से सिर्फ पैसों के लिए लड़ती हैं, या मेरे पापा सिर्फ मेरी मम्मी को तंग करना चाहते हैं, या मेरे मम्मी की फैमिली अच्छी नहीं है, वो लोग बहुत ख़राब हैं, या मेरे पापा मेरा ध्यान नहीं रखना चाहते। इस तरह की करेक्ट, चीज़ें जो आपको लगे कि इट साउंड्स लाइक एन एडल्ट स्पीकिंग, करेक्ट। वहाँ पे हम as society, as friends, and as extended family, the best role that we can play is to just question the child's statements in a very open manner, so that the child does not feel targeted. उसको ये ना लगे कि हम उसे प्रेशराइज कर रहे हैं या वो गलत है, लेकिन उसे सोचने का मौका मिले कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। और बहुत ही सिंपल Don't सवाल, doubt it. Don't doubt the child, but basically ask questions to make the child think more. rather than saying that I don't think that's true, या फिर नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या फिर आप उसे अगर रिजेक्ट करेंगे या काउंटर करेंगे तो शायद यू माइट शट डाउन द चाइल्ड्स माइंड टुवर्ड्स यू, बट रादर जस्ट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस दैट बेटा आपको ऐसा क्यों लगता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये जानने की कोशिश करें कि वो बच्चा अपनी माँ से या पिता से पिछली बार कब मिला था, क्योंकि जितना ज़्यादा ये गैप बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा ये प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा अपने पेरेंट के बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचना, फील करना, और उतना डीप रूटेड तरीके से उसको बिलीव करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू आस्क दोज क्वेश्चंस।
Beautifully summarized, Pallavi. Beautifully summarized. Great. So, Dr. Kapoor, going back to the question where we started this discussion, which is what are the short term and the long term impacts of alienating a child from their parent, and how can we identify these? Are there any red flags that we'll be able to see in the process? So, that's why actually I started. So let's first talk about short term because the long term though is are so drastic and so terrible that Mm. probably the whole conversation will get hijacked onto that because we will obviously get into that. Right. But short term is important because it's about जितनी जल्दी हम उसको पकड़ के बचा सकते हैं, right? That is why I mentioned about some of the red flags which I spoke about, right? शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज अनफॉर्चुनेटली बहुत कम होते हैं. दैट इज वाई वी नेम्ड आवर ऑर्गेनाइजेशन बैम्बू ट्री, जो आपको मैं समझा रहा था कि 5 साल Mm. तक कई बारी पता नहीं चलता है, राइट? Mm. द चाइल्ड इज समटाइम्स प्रोग्रेसिंग सीमिंगली नॉर्मली, राइट, ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, सीमिंगली नॉर्मली. बट दो किस्म के बच्चे होते हैं. देर आर टू काइंड्स इन साइकेट्री, व्हाट वी कॉल एज इंटरनलाइजिंग, यानी कि जो अपने अंदर समा लेते हैं उस पूरे ट्रॉमा को, दुख को, राइट, Mhm. ऑफ अ लॉस ऑफ अ पेरेंट. या दूसरा, राइट, is the ones who externalize, the ones who actually rebel. The Right. internalizing ones are the more difficult to identify क्योंकि वो typically can be identified only in the schools, right? Schools के अंदर, that is why I say the teachers will play an extremely important role in identifying. The first thing we will see in the internalizing कि वो दोस्त कम हो जाते हैं. Mhm. You will see their desire for their physical appearance. If you see their dresses, and if it's a girl child, the dress that she'll be wearing will be dirty, crumpled. वो स्कूल के अंदर लंच ब्रेक के अंदर अकेली बैठी रहेगी, राइट? शी विल बेसिकली ईट फूड ऑन हर ओन. और उसके सिर्फ एक या दो अच्छे दोस्त होंगे क्योंकि वो ना डर चुकी होती है, क्योंकि उसको अपनी कहानी किसी को बतानी नहीं है. बिकॉज वो शी इज अशेम्ड ऑफ हर स्टोरी ऑफ हर लाइफ एज ऑफ नाउ, क्योंकि उसे भी पता है कि काफी मैं झूठ बोल रही हूँ. तो वो उसके सिर्फ एक या दो दोस्त होंगे, और उन एक दो दोस्तों के साथ अगर कोई और दोस्ती करने की कोशिश करेगा तो वो फिर अग्रेसिव हो जाएगी, right? Things Mm. like that are for the internalizing. That is why the teachers need to pay a lot of importance to saying कि पहले अगर फादर पीटीएम में आते थे तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं. Mm. They need to start thinking about from that angle. बच्चे जो है उसके क्या दोस्त कम हो गए हैं, क्या उस बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर इंटरेस्ट कम हो गया है, राइट? जैसे पहले वो स्टे बैक करती थी, स्विमिंग करती थी, या हॉर्स राइडिंग, या वट एवर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वो खत्म हो गई हैं क्या? दे मस्ट द टीचर्स मस्ट स्टार्ट लुकिंग एट दैट. तभी ये पहले आइडेंटिफाई इंटरनलाइजिंग वाले इश्यूज हो सकते हैं, right? Mhm. The externalizing ones are much easier to identify, Mm. राइट? बिकॉज वो क्या करते हैं, वो रिबेल करना शुरू कर देंगे. दे विल बी एग्रेसिव. उनके एकेडमिक मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे. दे विल स्टार्ट बंकिंग क्लासेस. उनकी अटेंडेंस बहुत कम हो जाएगी, राइट? Mm. अगर गली के अंदर वो किसी के साथ खेलते हैं जैसे बाकी बच्चों के साथ, सो यू विल सी देम being they'll come back with a lot of hurt and ladai and things like that. So Mhm. those are the externalizing ones. But that is why we must remember in schools, हम ना कई बारी बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि अच्छा बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, Mm. ठीक है ना, Right. तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? बट इट्स स्पेशली इन इंडिया, your academic marks, yeah, your school marks are a very very poor reflection of the mental trauma and your mental status that you're going through in life. तो हम कभी ये ना कंफ्यूज करें कि अच्छा क्लास में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ये एलियनेशन नहीं हो सकता, Right. right? Right, in Right. fact. Mm. Yeah, yeah, So please. these are the short term kind of this thing. Talk a little bit more if you want about short term or questions, because the long term are so severe that Mhm. you all of you will be shocked with the kind of consequences which we are talking about. Sure. Uh, uh, Dr. Kapoor, one thing that sort of stood out when you were talking was you said कि उस बच्ची को पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ.
तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे why are they playing along to the alienating parent story, and how, like, what really is happening there? Correct. Okay, so initially, obviously, when this happens, the child knows कि वो झूठ बोल रही है, but then over a period of time, the child justifies it in the head and buries the झूठ वाला part, right? But initially भी वो ऐसा क्यों कर रही है? You know, because see, as people, we all justify everything in our lives, right? And we tend to suppress the bad thoughts. But initially भी वो ऐसा क्यों कर रही है? Pure simple thing, self-interest. वो सातों दिन is staying with an alienating parent, Right. right? Hmm. Forget children. We've done research on jail paroles. These are adults. Hmm. आपने कभी देखा है कि एडल्ट्स जो हैं वो भी जेलर के नाम पे कितना डर के झूठ बोल के, बिकॉज द जेलर हैज अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर दैट जेल्ड इनमेट्स लाइफ. वो Right. उसके एक इशारे पे कुछ भी कर सकता है, Hmm. राइट? यहां तक कि Right. मैंने देखा है कि जेलर सिर्फ एक बीड़ी के लिए इनसाइड अ जेल, एंड सिंस आई हैव पर्सनली प्रैक्टिस्ड medicine as a doctor inside jails, I can tell you this as an example, right? That सिर्फ एक बीड़ी के लिए the jailer keeps one बीड़ी in his pocket. वो उस inmate से या convict से कुछ भी करवा सकता है. And think about in a child's life, the child is living in the total control. She is totally vulnerable and total control of that house. And like we spoke about the consequences, कि मेरे को एक दिन के लिए उसमें बाथरूम में बंद कर दिया जाएगा, Okay. एक True. हफ्ते तक कोई मुझसे बात नहीं करेगा, right? I've also Hmm. seen where the children have been physically abused and slapped for this, Hmm. Hmm. right? So that And is sure. And Dr. Kapoor, it also makes me question, because you said one of the first people who will be able to flag this off, या जिनको सबसे पहले ये symptoms दिखेंगे, वो teachers होंगे. But oftentimes teachers या schools इन चीज़ों में, to say very crudely, इन पचड़ों में पढ़ना नहीं चाहते. They say that, ये आपका family matter है, या maybe there's already a matter in the court, so they don't want to be involved. तो correct. ऐसे में टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर अगर कोई टीचर है जो ये साइंस देख रहा है और समझ रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं? Actually, that's the sad part. So, there is a sister organization whom I work very strongly with, Childrights Foundation, and with them, we worked with Dr. Swati Popat and Early Childhood Association, where we came up with a whole policy document. It's a beautiful piece of a whole booklet where what teachers can do, how they can educating them about parental alienation, because उनको भी खास पता नहीं है, right? So we are trying now to work with them to circulate this all across. But truthfully, what are the few things that the teachers can do, right? Number one, क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि जैसे अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज केस है अंडर पॉक्सो एंड एवरीथिंग, देर इज एनसीपीसीआर एज अ बॉडी विच दे कैन रिपोर्ट टू एज अ गवर्नमेंट बॉडी, राइट? In such cases there is no such, because this is emotional abuse, right? This Mhm. is not sexual abuse, right? Physical and sexual abuse, there is still recognition and there is this thing available, there are government bodies available, but emotional abuse के लिए उनके पास नहीं है, right? The government body. So we did a whole workshop with NCPCR when we asked them to set it up, but I think थोड़ा time लगेगा probably for people to be aware. But what are the teachers they can do meanwhile, जब तक ये bodies नहीं set up हो जाती है, these Mhm. centers don't set up? First is sit down and talk to the child. Means just try and find out. Don't ask any intrusive questions. थोड़ा सा पूछने की. काफी बारी 90% of the chance बच्चा नहीं बात करता है. ठीक है? Then what you do is ask the child to come and sit in front rather than going in back. बैक सीट पे मत जाने दीजिए उसको. लंच पीरियड्स में पक्का उसके बारे में सोचिए. आस्क सम गुड स्टूडेंट टू गो एंड सिट एंड बिकम फ्रेंडली विद हर or the child. Third, send the child to your school counselor. Let the school counselor spend at least some time with it, right? Fourth,
make sure कि every piece of information about the child is going both to the mother and the father. अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, what the schools are doing is कि वो एक पेरेंट को टोटली ब्लॉक ऑफ कर देते हैं, द टारगेटेड पेरेंट को टोटली ब्लॉक ऑफ कर देते हैं, बिकॉज द एलियनेटिंग पेरेंट टेंड्स टू, बट इंश्योर कि दोनों को इंफॉर्मेशन जाए, right? Hmm. Bring them into the PTMs, ensure both the mother and father come for the PTMs, right? Hmm. Then, lastly, what they can do if all of this doesn't help, right? They should write a small one page report of what they feel are the changes, write it down in the diary of the child, and send it across, right, Hmm. to the parent. Just a small, इसका फायदा दो होता है. एक तो this acts, see, like we will talk about the alienating parents, there are some very innocent alienating parents also. उनमें कई बारी this can actually act as a way that they may realize in this way. Right. Second, this becomes a record for the rest of the life for this thing. So if at any point of time there is an issue, the other people can use this, because क्या होता है कि टीचर्स जो है हर साल बदल जाते हैं एज एकेडमिक ईयर्स, Okay. right? So this acts as an information for the next year's teacher to actually see, understand, and do things like that. Right. Plus, we've created a number of worksheets and everything which are there for teachers, but that's a very detailed training workshop which we do with teachers to do this. But simple things ये कर सकते हैं. Sure. And आपने mention किया कि there's a booklet that you've put together. Is this Yes. booklet accessible somewhere for teachers who might be interested? Absolutely. So, when you publish this, I'll send you the link. It's available online fully. And Early Childhood Association is a body which has close to about 1,000 schools as its members. उनकी वेबसाइट पे भी हमने अपलोड किया हुआ है. Okay, that's perfect. So we'll link that down below under the video. And one more thing that you said is it's possible that sometimes the alienating parent is innocent. हो सकता है alienating parent नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं. And this is something that I was thinking about, that oftentimes शायद किसी parent का intention ये नहीं है कि मैं इस बच्चे को अलग कर दूं या and in fact, I'm thinking back to a very close relative, whose story is coming up in my head. And it wasn't really so much, the mother wouldn't say things like, your father is bad, या ऐसा नहीं होता था, लेकिन वो बस हम लोग खेल रहे होते थे और वो अपनी कहानी बताती थी कि ये हो रहा है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया. And it was very natural for us to feel sympathy for the lady, and to feel, and naturally to feel ke, the father is not a nice person or whatever, to make our own deductions out of that. So ऐसी situations में जैसा आपने कहा था, हो सकता है कि alienating parent नहीं समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, and such notes can help them to start thinking about their actions and the consequences as well. Absolutely. In fact, just to answer your question very quickly, there are three kinds of alienating parents, and roughly one third, one third, one third होते हैं. मतलब there Okay. is no exact definition, but what Hmm. I've seen is 30, 30, 40% is what it is. Right? So first one is what we call as the naive. Second is we call as the revengeous, and the third we call as the disordered. Okay. Okay. सो द नाइव या जो इनोसेंट वाले होते हैं वो ये होते हैं कि भैया सिर्फ क्योंकि गुस्सा है, अभी सेपरेशन हुई है, गुस्सा है, तो वो गुस्सा जो है निकल जाता है. दे डोंट मीन एनी मैलिस और हार्म टुवर्ड्स द चाइल्ड, Hmm. राइट? वो जैसे द एग्जाम्पल दैट यू नरेटेड वाज द परफेक्ट एग्जाम्पल, एकदम कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए हैं, लेकिन उनको अगर आप थोड़ा सा समझा दो तो वो Hmm. इमीडिएटली चौकन्ना होके, बिकॉज फॉर देम द चाइल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट than Right. their own emotional feelings, right? Right. Which is Right. how it should be for all parents anyway, right? तो वो, और ये ज्यादातर 6 महीने में बंद हो जाता है, 6 से 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल में खत्म हो जाता है. Hmm. देन कम्स द रिवेंजस. सो द रिवेंजस वंस आर द मोर, स्लाइटली मोर प्रॉब्लमैटिक वंस. वो करीबन 1 2 3 साल तक चलते हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर सम मोटिवेशन टू गेट out of this child. They're using the child as a tool. Hmm. हो सकता है पैसा, to get greater this thing. हो सकता है to get revenge, कि अच्छा ठीक है, तूने मेरे साथ ऐसा किया तो I will show it back to you.
right? Mm, And then the child is right, just becomes a tool to use it, right? right. But there is the third one, which is the worst, and which we found almost 40% of the alienating parents are like this. Some Mm-hmm. research shows even 60%, Mm, right? mm, Uh, they are suffering from what is known as, there is a personality disorder. It's a well recognized personality disorder known as either borderline personality disorder या फिर नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ये mm. व्यूअर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है द नेम्स, बट this is a well recognized personality disorder, and the unfortunate part is children who are brought up by parents who have a borderline personality disorder have worse outcomes than even children who are brought out by schizophrenic or depressed Wow, parents. really? This is a very very severe, it's unfortunate. Borderline का मतलब ये नहीं है कि अच्छा डिसऑर्डर है कि नहीं. It's actually at the upper end of the borderline कि they were thinking कि this is just one step below schizophrenia, Ah, I see. right? Okay. So there are 9 criterias for it, but anyway, let's not get into that. Let's not get into Sure, that. sure. But I do want to delve deeper into the long-term impacts, and I think you've spoken a lot about short-term and how what are the red flags, how can we recognize them. What do you consider long-term, and what are the impacts? Sure. Before I even get into the impacts, I'll ask you, what do you think the impacts will be? Right? Rhetorical question, but let me let me state it. Right? Imagine what is actually finally the outcome of that child. Half the child, half the family of the child has been erased of his or her life. And remember, it is half the family, not just the parent. Dada, dadi, nana, nani, uncles, aunts, cousins, dost, सब आधा family हट गया है, right? Like a judge said to me one day, where he said it's like living with one arm, one leg, one brain, one eye, right? Right, Because right, you've cut off half the roots of the and the half the, so right. half the family is erased, while the other half is teaching the child to lie and hate, Mm-hmm. Right. right? So the consequences come originate from that, right? So the Hmm. consequences obviously originate from both loss of a family or loss of a parent, or dusra from hatred. Like I'm a Buddha, this thing I always say ki no person can ever hate the other person without hating himself or herself, right? But That that's a is. spiritual angle, but psychologists have a different way to explain it. Okay. So the consequences for this kind of a child, as I said, is, so American Psychiatry Association, which is the world's body for understanding all psychiatric disorders and everything, and जो इंडिया में भी वही फॉलो करते हैं. There are only two bodies, WHO and American Psychiatry Association, जिनके सारी चीजें हम फॉलो करते हैं. So American Psychological Association did a study, और उन्होंने कहा कि the outcomes in these children, as I said, are worse than even sexual abuse of children, which means 40% of them, 40% of them suffer from anxiety disorders for all their lives. Hmm. 45% of them practice self harm or suicidal tendencies. Hmm. Right? 55% of them develop personality disorders themselves. Right, Right? 55% of them abuse alcohol, and 35% of them abuse drugs. right. Right? This may still seem, God, this seems terrible. But let me tell you the more important thing. So, the study of medicine today, we've realized, has completely changed by what is known as ACEs or ACE study, which Hmm. is ACE stands for Adverse Childhood Experiences, Right. right? सो देर आर 10 ऐसे एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, और पेरेंटल एलियनेशन जो है वो चार, दैट इंक्लूड्स
Four of those aces. I see. So, but what is the consequence of that? You have basically the alienated child will live its life 20 years lesser. Life expectation 20 of years. her, right? Which is why I say this repeatedly. Parental alienation is literally murder by slow poisoning. And why does the child die earlier? It dies earlier not just because of suicide and things, liver disease, cancer. We've been able to find that cardiac disease like heart attacks will happen 10 to 20 years earlier for these children. I can even go further into details of how in the body this reacts, but Mhm. that's not important because they found all the pathways and the toxins and everything is now available by science. But these children are basically literally being murdered every day, every day. So the long term consequences are extremely, extremely severe for the child. Sure. Um, Dr. Kapoor, you mentioned that four of the ACEs are reflected in these children. Could you elaborate a little bit more on that? Okay. So the first, so among those 10 aces, which are the four which are reflected in this thing? The first ace is loss of a parent due to divorce. Can you imagine? They were so specific. And the aces, they were not studying parental alienation, right? Hmm. Hmm. So the first ace is loss of a parent due to divorce. Right. Second is emotional abuse. Parental alienation by itself is exactly emotional abuse, right? Because the body which defines emotional abuse is a body called as APSAC. They actually defined and they said parental alienation is exactly that. The way they spurning, terrorizing, exploiting, all of Hmm. that is there in, but that's very technical details. I won't get into it, right? So emotional abuse. Third is presence of a psychological or psychiatric disorder within the household. That's a Hmm. household dysfunction. And as we Hmm. spoke about, 40 to 60% of alienating parents have this, right? A psychological disorder. Right. Psychological. And the fourth is emotional neglect. यानी कि मेरे को अब एक चीज बताओ, बच्चे की कोई बात एक्चुअली सुन रहा है इसमें? द No one. एलियनेटिंग पेरेंट तो कुछ नहीं सुन रहा है. The बिल्कुल. child is just a tool. So the emotions of the child, the needs of the child are being completely thrown away. The Right. child's emotional are completely being neglected, Hmm. right? Because the child actually wants a life with both the mother and the father. The child doesn't want to lie. The child doesn't want to hate. But all his emotions are being completely neglected. So those are the four aces which parental alienation by itself encompasses or consists of. Sure. Dr. Kapoor, two things come to my mind. I'm not sure if this is directly relevant to this conversation right now, Sure. but I just want to add it. The first is you mentioned that the emotional trauma of living in a broken family is huge, but oftentimes, let's say both the parents are amazing people, they just don't get along. तो ऐसे में क्या डिवोर्स नहीं लेना चाहिए बच्चों के लिए? Is that a better environment? Like, I'm just thinking, like, let's say there is somebody listening to the podcast जो अभी उस moment in life में है जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि क्या हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए. So what is the better way here? Simple, and it's a categorical research is now very clear, जी. very, very clear. If the two of you are fighting, can't get along, right? जी. Use counseling, use your tools to actually, try your best to be together, right? But for a child to live in a fighting household where the mother father hate each other, they're always at each other's throats and everything is much worse. Hmm. Please, if you can't get along, you people have irreconcilable differences, you can't see it eye to eye, please get. And this, but the simple answer to that is the divorce is between a husband and a wife. There is never a divorce between a parent and a child. That Hmm. can never Right. happen,
right? Right. And the research is, so there's a very beautiful research. So Sweden as a country, उन्होंने क्या किया, वो अपने सारे बच्चों को हर साल साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं. They are building a whole database, and they Okay. beautifully call this project the Elvis Project. Okay, nothing to I do see. with Elvis Presley, right? Okay. Okay, right. So they call it the Elvis Project, right? So Mhm. what they do, they study their children for years and years and every year, right? So 1.5 लाख बच्चों को उन्होंने स्टडी किया, 1.5 लाख बच्चों को. एंड दे सेड जी, द आउटकम्स इन अ न्यूक्लियर इंटैक्ट फैमिली, यानी कि जिनका डिवोर्स नहीं हुआ है, इज ऑब्वियसली द बेस्ट, राइट? जी, The children who have been divorced and they are in shared parenting, right? Yani ki right. shared parenting, we'll hopefully talk a little bit about it because that is the solution to parental alienation in some other way, right? In shared parenting are almost as good as children in a nuclear intact family. Yani ki agar aap dono झगड़ने की बजाय you go your separate ways, but you share the custody of the child Mhm. grows up to be almost as good as if without a divorce. But where the child's one parent visits the child just for, let's say, 2 hours in a week, what we call as a Santa parenting. You know why we call it Santa parenting? Because it's like Santa Claus. Because you know that the other parent वो गिफ्ट्स लेके आता है हफ्ते में एक बारी या महीने में एक बारी, और बच्चे के साथ लाइक सांता क्लॉज 5-10 मिनट या 2 घंटे बिताता है और चला जाता है, जी, राइट? So those ones have the worst outcomes and very, very terrible. So the difference between this, intact family and shared parenting family is very little. The difference जी, between this and that is very. So please, so to answer your question, if you can't get along, use counseling, use ways to try and come together. But if you can't, please go ahead and divorce and share the custody of your child.